Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our economic entomology paper. As we were discussing about the medical entomology, so today we will talk about the medical entomology or medically important insect, that is housefly. So let's proceed for the morphology. So first we will see that what topics we have to cover. We have to just discuss the morphology, and then the vectorship of housefly, the pathogenicity of housefly, and the control measures of housefly. Now let us go for the morphology. So you can just see it is a small insect that belongs to the Diptera, and in India the most common housefly is Musca domestica. So Musca domestica is the common housefly, which is having a small cylindrical body. It is having a head, that is a globular head is present, and they are active in summer and rainy season. So they are seen in abundance or in large number in summer season as well as in rainy season. रेनी सीजन में और समर सीजन में ये बहुत एक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं. एंड when we are talking about the morphology, so we will start from the head region. It is having a globular head which is covered by the large reddish compound eyes. It has aristate type of antennae. Mouth parts are of sponging type, and these are having the suture or U-shaped suture is present at the front of the head, and these insects are having yellow stripes on their thorax. Black stripes on their thorax. You can just see here, and abdomen is yellow in color. Their body is having hairs. Their legs are hairy, and body is also just covered with hair. So hairy abdomen as well as thorax is there, and hairy legs are there in case of the houseflies. These are the common insects, we can say, which spread number of diseases. So they are contaminators. They just don't pure suck the blood, or they don't just directly transmit the pathogen to the body of human beings, but they just contaminate their food material or any thing of human beings. By contamination they spread different type of diseases. So let us go for the vectorship. So the house flies are acting as a vector for number of diseases, amongst which some are here, that they just spread amoebotic dysentery, they spread typhoid fever, infant diarrhea, they spread cholera, poliomyelitis, and tiniasis, ascariasis, and other diseases are like which are spreaded by these insects are yaws is there, and they also transmit frambacia, and they just transmit the conjunctive eyes conjunctivitis or trachoma. So they even transmit nectar americanus, and they transmit Echinococcus granulosus. So there is no need to talk about all these, but the enlisted one are also sufficient to know about. So they spread in short number of diseases, and amongst these they spread amoebatic dysentery, टाइफॉइड, कोलेरा, डायरिया, टीनियासिस, पोलियो, ऐसी बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो स्प्रेड करती हैं, एंड दे एक्ट एज अ वेक्टर फॉर सच डिजीज़ और इन स्प्रेडिंग ऑफ सच डिजीज़ वो हेल्प करती हैं. एंड बेसिकली आई जस्ट प्रिफर टू कॉल देम एज अ मैस दैट पोस्टमैन बोलती हूँ मैं, जस्ट बिकॉज के वो क्या करते हैं कि वो जो पैथोजन है एक जगह से उसको दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, विच मीन्स दे जस्ट लेट देम टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू द
human body or any animal or any organism's body so as to spread the diseases. तो मैं वेक्टर्स को मोस्ट प्रोबेबली पोस्टमैन भी बोलती हूँ. तो वो ऐसे पोस्टमैन वाला काम करते हैं यहाँ डिजीज़ स्प्रेड करने का. सो दे आर एक्चुअली अ मीडिएटर, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज़. दैट्स व्हाई आई कॉल देम एज अ postman also. Now let us go for the pathogenicity. Sorry. So amoebic dysentery जो है that we all are aware of that कि एंटामीबा हिस्टोलिका से होता है. सो इन शॉर्ट पैथोजेनिसिटी में मैंने बोला था कि हमको देखना है कि वो कौन सा पैथोजन स्प्रेड करते हैं या किस पैथोजन को वो एज अ वेक्टर हेल्प करते हैं. सो एंटामीबा हिस्टोलिका वो ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं एंड दे ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसमिटेशन ऑफ सैल्मोनीला टाइफी एंड इस्चर्शिया कोलाई को वो स्प्रेड करते हैं. तो मैं यहाँ पे मैंने एक्चुअली इनलिस्ट किया है कि कौन सी डिजीज़ वो किस पैथोजन से होती है. सो वो अमीबिक डिसेंट्री को स्प्रेड करते हैं विच मीन्स कि वो एंटामीबा को स्प्रेड करते हैं. दैट्स वाई अमीबिक डिसेंट्री हो सकती है. दे हेल्प इन स्प्रेडिंग सैल्मोनेला टाइफी जिसकी वजह से टाइफॉइड फीवर होता है. इस्चर्शिया कोलाई को स्प्रेड करते हैं जिसकी वजह से इन्फेंट डायरिया होने के चांसेस हैं. एंड दे जस्ट हेल्प इन स्प्रेडिंग विब्रियो कोमा जो कोलेरा कॉज करता है. एंड दे स्प्रेड पोलियो वायरस जिसकी वजह से पोलियो मिलेटिस हो सकता है, मिलेटिस हो सकता है. एंड दे स्प्रेड टेनिया सोलियम से टेनियासिस होता है. एंड एस्केरिस लेम्ब्रिकोइड्स वो स्प्रेड करते हैं जिसकी वजह से एस्केरियसिस डिजीज़ होती है. So let us go for the control measures of these insects. So how to control them? First of all, you should keep cleanliness in your house, your kitchen room, because we see that they mostly prefer to get to the food material, or they just place or they just settle down at the food material. जहाँ पे food material होता है या जहाँ भी कोई मटेरियल स्टिकी या शुगरी मटेरियल हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में नज़र आते हैं. सो देयर इज़ द बेस्ट थिंग टू कीप क्लीनलीनेस एट द किचन रूम एंड कीप द food material sealed with net seals, or that you can just say the food net जो है उसकी हेल्प से आप उसको क्लीन रख सकते हो. आप उसको इन्फेक्शन से बचा सकते हो, कंटामिनेशन से बचा सकते हो. और यू हैव टू कीप क्लीनलीनेस एट योर हाउस. रेगुलर बेसिस पे होम क्लीनिंग करनी चाहिए सो दैट के अगर वहाँ पे जर्म्स या जो भी हाउस फ्लाइज है वो आकर जर्म्स ना स्प्रेड करें. एंड ये रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए. एंड यू शुड क्लीन द गार्बेजेस or which is just near to your that household place we can say, जो आपके यार्ड्स के पास में फ्रंट यार्ड हो या बैक यार्ड हो जहाँ भी हो वहाँ पे गार्बेज क्लीनिंग रेगुलरली होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मंथली कर लो आप, और विद इन 8 days विद इन वीक बोल सकते हो. सो यू मस्ट कीप क्लीनलीनेस एट योर होम किचन रूम एंड यू शुड जस्ट कीप योर फूड मटेरियल सील्ड विथ the food nets. And keeping cleanliness or just cleaning the garbage around your household material will be helpful in preventing from the house flies. तो वो आपको preventive measure type हो सकता है कि आप उसको control करने के लिए आप क्लीनलीनेस रखोगे तो फ्लाइज़ के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे. बट इवन मोर देन दैट अगर इन्फेस्टेशन हो रहा है हाउस फ्लाइज़ का, बहुत इन्फेस्टेशन बढ़ गया है, सो यू कैन जस्ट यूज़ द sprays to get rid of from them. So you can just prepare sprays, or you can use DDT solutions or BHC solution or chlorine solution to just get rid of from. तो स्प्रेइंग कर सकते हो आप क्लोरिडेन से या DDT सोल्यूशन से या BHC सोल्यूशन से आप स्प्रेइंग कर सकते हो, या फिर यू कैन जस्ट यूज़ 3% of formalin solution so as to keep the flies away from your house. So this chemicals you can use, or other than that there are number of that
chemicals or products are available at market which can help you to get rid of from the house flies. So these were the some precautionary methods and the chemical controlling methods so as to get rid of from the house flies. Hopefully you have understood it. So thanks for watching. Have a nice day.